cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Okay. Hello, everyone. Welcome to the Generation Gap podcast. I'm a visibly sick Taimur Mir, and that is a visibly sick of it, Daniel. So, Daniel Ahmed, would you like to explain why you're sick of this shit? जो अभी चल रही है. It's just that thing कि मैं मुल्क से तंग आ- हम अच्छा. बात करते हैं अपनी इकोनॉमी सही करने की और हम बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट्स करते भी फिर पाक बीन जैसे एंड हाँ हाँ, इससे बेहतर है तो हम. इट्स अ नेशनल डिस्ग्रेस. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आई थिंक लेकिन उसमें कसूर जो है ना वो हम इतना ज्यादा उसमें डाल भी नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज एन एग्रीकल्चरल इवेंट. उन्होंने बीन्स मंगवाए थे. वी जस्ट सेंट देम द रॉन्ग बीन्स. क्या किया जा सकता है? तो उसमें हमारा कसूर नहीं. इट वाज जस्ट कंफ्यूजन हो गई थी. जो ब्रीफ था वो प्रॉपर तरीके से लोगों ने पढ़ा नहीं था उसका. सो या आई मीन बेसिकली मैच का हम क्या बात करें. मैच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. When there are larger diplomatic issues at play here. Yeah, match was diplomatically cursed. Like वो जो Nikoti था, I can't pronounce his name. He just उसने tweet लिखे. They acted like monsters on our team. We can't really blame them, but we know that we have excellent players. They are the best in the world. हमारा middle order तो सब पता है कि like शानदार है. So like obviously वो बिल्कुल बेहतरीन. काली जबान लग गई. Which I should take back, I guess. But हाँ बिल्कुल. ये रेशियो कमेंट्स यहाँ नहीं चलेंगे. आपने इस तरह की कोई बातें नहीं करनी. ठीक है. तो बेसिकली हाँ, तो कमिंग टू द लार्जर इशू वो मैं कह रहा था कि द मैच जो जिस तरीके से भी हुआ जैसे भी हुआ एक बॉल और एक रन से मतलब आखिर में बात आ गई एक रन पे हारने की. तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. So we're just going to talk about the larger issue at hand. But before we get to that, let's start off with a sponsorship message. So this program is brought to you by HBL, which has also brought us such amazing things as Pakbean in the past, and now it's sponsoring our program. So maybe and hopefully in 10 years we can also start a diplomatic conflict with, I don't know, Nicaragua at some point. So thank you HBL for sponsoring us and for sponsoring our agricultural industry. Like very good on them. Thank you. Absolutely wonderful. So अब हम let's start off with the incident at hand, and पहले हम शुरू करते हैं कि at least in context of the game क्या चल रहा था and where this entire incident started. So it started with this gentleman, and I think I shared a screenshot. आपको शायद पता नहीं था. You were like blissfully unaware of this thing. कि जब हम अपने ग्रुप के ऊपर we have a cricket group, we mentioned many times कि उसके ऊपर हम बात कर रहे थे about Pakbean, and Daniel says, "Oh, Pakbean क्या है?" मैंने कहा, just go on Twitter and search करो इसको, and you'll thank me later. And then he just came back afterwards. Both of us he was like extremely delighted to find out this amazing thing that was going on. और जो उस पे एक particular बंदे ने शुरू किया था उसके बारे में भी like हमने देखा कि वो बेसिकली काम मैंने उससे कहा था कि पाकिस्तान जो है उसका हम बदला लेंगे. पाकबीन का बदला हम लेंगे. आपने जो है हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है. और देयर इज सम गाय कि क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? कहते पाकबीन के जो है तुमने भेज दिया था. मैं कहती पाकबीन क्या है? एंड देन ही शेयर्ड द पिक्चर ऑफ दिस फेक मिस्टर बीन विद लाइक टू पीपल सराउंडिंग हिम. उसने कहा दिस इज द फक दैट इज पाकबीन, जिसकी मैं बात कर रहा था. और वहां से इंसिडेंट शुरू हुआ. उसने कहा दुआ करो कि बारिश हो जाए, तुम्हें बारिश आके बचाएगी इस मैच से. तुम्हें पता नहीं हमारा. और we all took it in the spirit that was supposed to be taken, and which was we thought was hilarious. So just हमेशा पाकिस्तानियों को होता है कि we turn everything into a meme, and then suddenly Pakbean became this meme जिसके ऊपर लोगों ने चीजें करना शुरू कर दी. और it was entirely as a meme. हम उस पर मजाक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि जी वो जिम्बाब्वे ने हमें मथुरा दी, हमने उनको पाकबीन दिया, हम डिजर्व करते हैं मैच हारना. मतलब इस तरह की बातें हो रही थी आपके ट्विटर के ऊपर. सो वहां से आपका मैच शुरू होता है, एंड देन वी गो इनटू द गेम. एंड उसके बाद जब पहले कुछ ओवर्स में जिम्बाब्वे सडनली स्टार्ट हिटिंग फ्यू रन्स, हम कहते हैं अच्छा शायद थोड़ा मुझे हल्का सा डर लगा. लेकिन उसके बाद द बॉलिंग टुक ओवर. पाकिस्तान ने उनको बड़े छोटे से टारगेट पे आउट कर दिया. मैं कहा चले मामला खत्म हो गया, सब कुछ
ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं है. And then suddenly we lose both our openers and then we keep losing our players and then suddenly एक सिचुएशन में आते हैं हम कहते हैं चलो अब तो जीत जाएंगे यार, हमारी 7 विकेटें पड़ी हुई हैं, बेयरली कोई रन रेट की जरूरत है, ये आराम से हो जाएगा. एंड देन सडनली करते 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वी गेट इनटू द सिचुएशन जहां पे सडनली इक्वेशन ऐसी बन जाती, लगता है कि ओह ये तो हम हारने वाले हैं, ये क्या होने वाला है. बट अगेन हमारे जो एक ऑप्टिमिज्म था कि यार चलें, ये तो नहीं हो सकता है, दिस नो वे, दिस नो वे, दिस नो वे. एंड करते करते नो वे वे हो जाता है और आखिर में आके पाकिस्तान टीम जो है वो एक रन से मैच हार जाती है. एंड देन दिस सडन एक्सप्लोजन एक होता है ट्विटर के ऊपर और यू गो बैक एंड देन सडनली पता चलता है कि जी प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे ने जो है वो उसने भी उसके बारे में ट्वीट कर दी. उसने कहा अगली बार जो है सही मिस्टर बीन को भेजना, जैसे रोन एटकिंसन को हमने अडयाला जेल में डाला हुआ है और उसको हमने हवाले नहीं किया. लेकिन बहरहाल उसने ये बात की और फिर देन शहबाज शरीफ ऑफ ऑल पीपल रिस्पॉन्ड्स टू इट कि जी हम ग्रेट क्रिकेट फैंस हैं और ये हैं और वो हैं. एंड देन द रियल फेक मिस्टर बीन पॉप्स अप. That was by the way, no. When Shehbaz Sharif tweeted ना, तो he was admitting कि हमने रोवन एटकिंसन को अडियाला जेल में ही डाला हुआ है. ये अगली डाला बार हुआ हम भेज अगली बार हम भेज अगली बार हम भेजेंगे, हमसे गलती होगी, हम उसको अगली बार भेज Yeah. देंगे. तो उसके बाद जो है वो क्या नाम है अपना, उसने भी उसका रिस्पॉन्स दे दिया. एंड देन ऑफ कोर्स ऑल द एंड यू नो वी वर ऑल हैविंग फन. उसने भी मजाक में किया था, शहबाज शरीफ ने मजाक में किया था. एंड आई वेंट बैक एंड चेक्ड इट और देन हमेशा की तरह द इंडियन नेशनलिस्ट गॉट इन्वॉल्वड एंड कंप्लीटली रूइंड एवरीवनस फन बाय यू नो गेटिंग Yeah. इन्वॉल्वड और फिर फुल किस्म की मीम्स शेयर करना. सेंस ऑफ ह्यूमर तो उनका होता कोई नहीं है, तो वो आके उन्होंने बकवासियात मारना शुरू कर दी. वही बाप बाप होता है वाला जो पुराना उनका लतीफा है वो कभी खत्म ही नहीं होता. स्टिल हिलेरियस गाइस, थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग इट. लेकिन वो अभी तक उसके साथ लगे हुए हैं. तो बेसिकली दैट्स वेयर द सिचुएशन इज, जो लास्ट इसके ऊपर हुआ था. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमने अपने पर्सनल कॉन्वर्सेशन में बात की थी, देयर इज अ डीपर डाइव इनटू दिस इशू जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं होगा. And as you know, मैंने जिस तरह से Daniel, I've mentioned I've worked in I do work in advertising, and Yeah. as with many social ills, it begins with advertising. Pakbean also begins with advertising. So ये जो है हम once again हम इसके ऊपर के blame ले सकते हैं कि जिस तरह से क्या कह सकते हैं वेडिंग रिंग्स का जो सारा तमाशा शुरू हुआ था, डायमंड्स वेडिंग रिंग्स का, दैट वाज आल्सो स्टार्ट बाय एन एडवर्टाइजिंग कंपनी. सो इसेंशियली ये जो है ना, हाँ एक्चुअली इट्स ट्रू. एक पीआर कंपनी ने एक्चुअली सारा काम शुरू किया था, डीबीएस के जो काम कर रही थी, उन्होंने ये सारा मामला शुरू किया था गिविंग डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स. सो इस तरह की मतलब और भी बहुत सारी सिगरेट्स को जिस तरह से हमने जो है एक सोशल फैब्रिक का हिस्सा बनाया और कूलनेस फैक्टर लेके आया, दैट वाज ऑल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. तो इसमें भी एडवर्टाइजिंग No, एजेंसीज no, का no. In the 30s, cigarette packets में लिखा हुआ होता था doctors recommend. डॉक्टर्स रिकमेंड, कुछ हाँ बहुत कुछ होता था. Yeah. There was a lot of shit Yeah. going on. तो मैं कह रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज have been responsible for a lot of evils including Pakbean. तो उसमें भी there's a particularly deeper dive in this particular thing as well कि Pakbean की history क्या है, and I have some like personal knowledge of that as well, having worked with some of the people who had worked on that campaign. So Yeah. basically scene ये होता है कि there was this campaign, so जो कि HBL ने बनानी थी. और उस टाइम पे जो उनकी एड एजेंसी थी, so the person I worked for was the executive creative director for that particular ad agency at the time, and they told me कि we wanted to show it in a light कि यार HBL की सर्विसेज इतनी आसान हैं कि any idiot can use those services. तो उस टाइम पे who was like the famous idiot in Pakistan at the time was Meera. So Meera was kind of famous for being kind of ditzy and kind of stupid. So the original idea was written in such a way कि जी मीरा जो है वो आगे पीछे जा रही है, मीरा is using HBL's products और मीरा के लिए भी उसको समझना और इस्तेमाल करना जो है वो आसान है. That was the whole idea, and I wish they had gone with Meera.
बिकॉज ऑब्वियसली फिर ये सारा सिनारियो जो है वो क्रिएट ना होता. लेकिन बहरहाल एट दैट टाइम दे डिडंट गो फॉर मीरा. आई फॉरगॉट कि क्या उसके पीछे रीजन था. आइदर ब्रांड टीम वाजंट ओके विद दैट और क्या चक्कर हुआ था, लेकिन उन्होंने उसके साथ जो है वो नहीं किया. So at that particular time they came up with the idea okay, then who's like the other famous character or person that we can say is, oh, this is, a person is like very stupid. And they thought, oh, Mr. Bean. So Mr. Bean is someone who's like very, overtly idiotic and stupid kind of a character. लेकिन complication थी कि Mr. Bean को आप कैसे लेके आए. It's not like you can hire Rowan Atkinson for a Pakistani ad campaign, चाहे HBL के लिए क्यों ना हो. So basically, here we go into another character. So this is not someone I know personally, although this is someone I used to follow. So there was a guy called Samish Shah. Some people might know him. Like certainly, some people are a bit older. He was a stand-up comic, someone who used to write articles for the Express back in the day, and he also happened to be in advertising, and he was a creative director in Pakistan back in the day, and he was part of the team that worked on this HBL campaign as well. So there's also a video that came out of him of his recently as well, where he said that he was, the person who actually came up with that idea, or at least he was also on the team जिन्होंने उस पर काम किया था. So this guy was famous at least in Pakistan for being like an impersonator of Mr. Bean. तो लोग उसको already जानते थे. He was doing this stuff. पाकिस्तान के अंदर वो already ये काम कर रहा था. And as per Samisha, he says that he didn't particularly like playing that character. Like उसके मुताबिक, so the funny part is also that he said कि यार मेरी बहुत acting range है और मुझे typecast किया जा रहा है, मुझे ये role करना पसंद नहीं है, ये है वो है. He didn't necessarily like doing this. लेकिन उसके बावजूद भी वो कर रहा था because obviously पैसा मिल रहा है. तो that's why he was able to do it. But the interesting part was कि they were basically, it wasn't like a case of Pakistan kind of stealing the character and just using it to their own advantage. It wasn't that. They basically got in touch with Rowan Atkinson's people and they asked him कि यार हम ये करना चाह रहे हैं role, are you guys okay with that? और उसको कोई probably कोई royalty या इस तरह की चीज pay की गई थी for using this character, because obviously the agency working on it was an international agency. They had branches over in the UK as well, and they got in touch with the UK branch and asked them to make sure कि यार जो हम ये चीज कर रहे हैं इसमें राइट का कोई मसला तो नहीं बनने वाला. So they sorted it out for them. तो जो चीज की गई थी यहाँ पे, the campaign that they did for HBL was completely legit. मतलब उसमें कोई लीगल इशू नहीं था, कोई इस तरह का मसला नहीं था. रोवन एटकिंसन या उसकी टीम वाज वेल अवेयर कि यार पाकिस्तान में मिस्टर बीन के कैरेक्टर को यूज किया जा रहा है, एंड दे एक्चुअली गेव देम पॉइंटर्स कि यार दिस इज okay, this isn't okay, Mr. Bean would do this and Mr. Bean wouldn't do that. So उन्होंने उनके स्क्रिप्ट्स को चेंज भी किया, मॉडिफाई भी किया. और जो चीज इवेंचुअली चली थी was given a go ahead by Rowan Atkinson's team. तो जो चीज यहाँ पे बनाई गई थी, that was okay by them. So once that was done, or campaign यहाँ पे चली, so this guy gets more traction in Pakistan as well. So apparently there was some PR company in Zimbabwe a couple of years back, और उनको कोई बंदा चाहिए था किसी एक एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के लिए जिसमें उन्होंने उसको बुलाना था, एंड दे एक्चुअली इनवाइटेड दिस गाय ओवर. और उन्होंने ये कहा था कि यार दे आर द वंस हु एक्चुअली presented him as the real Mr. Bean. He was just doing his bit, which is him playing the character of Mr. Bean. So उसमें भी कोई सा मसला नहीं था. We on our end hadn't really done anything illegal in that sense कि हमने कोई character चुराया नहीं था. We had told Mr. Bean's team कि we will be doing that. तो उस तरह का सीन भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. So the real culprits in this case were that Zimbabwe की जो भी वो PR कंपनी थी या इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी थी जिसने ये सारी हरकत की थी, जिन्होंने उसको प्रेजेंट किया था, जिसका किसी को पता ही नहीं. अगला जो ग्रज मैच होगा ना वो होगा जिम्बाब्वे एंड एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस. सॉरी क्या हुआ? अगला जो ग्रज मैच होगा ना, that would be between Zimbabwe and the agricultural conference. वो जो, लेकिन मुझे लगा कि इसमें
मैं क्या पंजाबी की कहावत जो हमें याद आ जाती है, क्योंकि वही बात है कि जिन्होंने एक्चुअल में हरकत की थी उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। वो पंजाबी में हम कहते हैं कि जी ये नाले नस गए थे तक नाले फंस गए। So I don't know if you हाँ, understand that or not, but you understand it, right? तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी टीम मारी गई, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बेचारे बिल्कुल दे हैड नथिंग टू डू विद दिस एट ऑल। और जो एक्चुअल करने वाले थे, जो वो क्या नाम है, घटिया जिम्बाब्वे की एजेंसी थी, वो मतलब कर कर आगे या फारिग हो गए और किसी को नाम ही नहीं पता। सो अब उस वो साल जो जो है है ना वो कल्चरल बूम हो गया था जिम्बाब्वे में। क्या हुआ। हाँ, उस साल जो है एग्रीकल्चरल बूम हो गया था, सरप्लस बढ़ाया जाता है बस बढ़ाया था। एग्रीकल्चर जिसको हाँ, एग्जैक्टली। सो basically that was like the background of it. इसके basis पे सारा कुछ हुआ, सब कुछ चीजें बनी। The good thing to come out of that was, the bad thing to come out of that was the Pakistan loss. The good thing to come out of it was the meme material that we had. So I think you have all of that stuff. Some of it I haven't really seen, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें देखी थी, but I think I haven't seen like all of the stuff. Can you share it? Can you see it? Yes, I can see it. So yeah. So Yeah, yes, so this that is was the the first. first. Yeah. So this was the first one that I think I had made regarding the unintended consequences of those ad campaigns के काम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके जो है वो खत्म हुआ। But अभी देखते हैं, I mean maybe the Pakistan getting knocked out of the World Cup may be a bit premature. वही बात है कि अगर पाकिस्तान सॉरी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हरा दिया और बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को हरा दिया और सूरज ग्रहण हुआ और जो है अ, हाँ, और अगर आपका टोस्ट जो है वो बटर साइड डाउन अगर लैंड करता है तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाती है। सो या ऑल ऑफ दैट हैज टू kind of align. So exactly, let's see next अगला वाला कौन सा, let's so this I think I haven't seen this one. Just any fake Mr. B instead of the real one, Zimbabwe. We took that person. हाँ, exactly. So by the way, have you seen that one? जो पिछला था actually the show. वो जो आई थिंक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी। have you seen the this one जो ये बुल्स के बारे में बनाया था, 96 बुल्स के बारे में? क्या इसका नाम था? ये जो I'm just really blanking on the name. बहुत अच्छी सीरीज थी. It was hilarious. Sorry, it was really amazing. बड़े मजे की, especially if you're interested in sports, तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। आई थॉट दिस वाज अ लेजिटिमेट, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स थिंगी, लाइक कोई हाँ, it was स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री। it was actually really good. बहुत मजे का था। I don't know if you've या seen it, मैं कह रहा हूँ if you haven't seen it, you should check it out. बड़े मजे का बनाया था उन्होंने। या ये जो था, अच्छा हाँ, let's go to the next one then. अच्छा, maybe दैट्स figure out who sent Pakbean to Zimbabwe. We know who sent them to Zimbabwe. It was whatever that goddamn PR event agency जिसने ये हरकत की थी। I don't know कौन है या वो, लेकिन उन्होंने उसको भिजवाया था। नहीं नहीं, हमारे हमारे क्वीन ने खुद बोला कि लाइक आई एम रोवन एटिंगसन एंड लाइक बिलीव मी ब्रो, लाइक यू सी दैट उसने पिक्चर वेयर लाइक डूइंग दैट थम्स अप। मतलब हमें बस ही फंसा दिया। हम अच्छे या खासे निकलने वाले थे उसमें से। Just when अच्छा, we नो thought वर्ड फ्रॉम हिम, मतलब छुप गया है बिल्कुल, उसको पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, ऑल दैट। didn't he come out and make that video? उसके बाद से गायब हुआ है क्या? क्योंकि वो आया था ना, वो पकड़ के भालू, उसने वीडियो जो बनाई थी, नहीं, I'm Mr. Bean, I love Zimbabwe, जो उसने आगे वीडियो बनाई थी अभी वो मैंने पाकिस्तान के मैच और फौरन बाद। बट यार छोड़े इसको। अच्छा आगे चले जिम्बाब्वे। डैमेज कंट्रोल, हाँ मतलब हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे उसको। हाँ, मैंने तो कहा था ना कि रिचुअल सैक्रिफाइस वो हमने करना है। रिचुअल्स। रिचुअल, एक बीन का हमने रिचुअल सैक्रिफाइस करना है ताकि हमारे ऊपर जो कर्ज आया हुआ ना फेक बीन वाला, वो हटे, पाक बीन वाला वो हटे। जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान क्रिकेट अल्लाह मुस्तआन। celebrated told Pakistan the real sentence to be next time because of Pakistan is being that is exactly what it is. क्योंकि जब आप उसको सारे एक्सप्लेन करने बैठेंगे कि यार ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था और इस वजह से जो है वो सिचुएशन बनी हुई है, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ ना कि मतलब 50 years in the future आप बच्चों को अपने बैठ के सुना रहे हैं कि
बेटा जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वॉर हुई थी उसके पीछे ये रीजन था कि बीन हमने भेज दिया था एंड थिंग्स एस्केलेटेड फ्रॉम देयर। और अपने मैच में हमने उसके बाद जाके अपनी फौजें वहां पे भेज दी, हमने टेररिस्ट हमले करवाए, उन्होंने फिर उसके बाद ये किया, फिर हमने उनके साथ ये किया लेकिन स्टार्ट जो है वहां पे हुआ था, तो कुछ पता नहीं फिर होता। उन्होंने जिम्बाब्वे ने हमें कुछ 50 साल कॉलोनाइज किया और उन्होंने पूरी हमारी बीन प्रोडक्शन जो थी उस पर कब्जा कर लिया yeah yeah anyway हाँ एग्जैक्टली, तो कुछ पता नहीं क्या ये सिचुएशन कहाँ तक चली जाए। सो या मूव, चलिए लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सा वाला है? yeah we should actually like warn ISI to monitor Zimbabwe की nuclear stockpiling. हाँ Like this is a serious issue. Like we shouldn't like वो हाँ military की strategy होती है कि 10% chance भी है तो जरूर उसको like as a 100% chance लेना 100% चाहिए. कंसिडर करें एग्जैक्टली It's a matter of national security. I love it so much. Like ये क्या how था? it was. Won't bet in Gray in Melbourne, and we probably won't even have This is a good match. we won't even have get Australia England on tomorrow. Meanwhile, there's the Mr. Bean grudge match in Perth where it's 22 and sunny. Who said that the city was dull? The Mr. Bean grudge match. Exactly. अब यही बन के रह गया. I think this is what we will be talking about in the context of any Zimbabwe and Pakistan rivalry in the future. कि जब भी Yeah. हमारी इसके बात की जाएगी कि हमारी ग्रेट राइवलरी जिस तरह से सडनली बन गई थी ना, क्या नाम है, बांग्लादेश और श्रीलंका की राइवलरी आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज मतलब एंड डोंट काउंट इट आउट, क्योंकि वो नागिन डांस एक जो स्टूपिड था उसकी बेसिस पे सडनली मतलब बड़ी एक खूनखार किस्म की राइवलरी बन गई है बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और क्या बता कि मिस्टर बीन के बायस जो है ना, क्योंकि अगली दफा मुझे लगता है सारे पाकिस्तानी फैंस मिस्टर बीन के कॉस्ट्यूम में पहन के जो है वो जिम्बाब्वे के मैचेस में जा रहे होंगे। We have अब ये देखें ना, we have the border Gavaskar trophy, we have the Ashes, और अब इंशाल्लाह we'll have the Pakbean trophy where the winner is like winner gets access to the real Mr. Bean. हाँ बिल्कुल। Yeah. हाँ, So, ओवन एटकिंसन को बेचारे को पता भी नहीं है yeah. कि उसकी लाइफ राइट्स के ऊपर मतलब जो है बाकायदा क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो हो रहे हैं। अभी शुड Yeah. इसको अलग तो टाइप ये के बॉर्डर फिर गवास्कर और है। होने वाली. हाँ मतलब उस तरह से बनाएगा तो मे बी हमें रोवन एटकिंसन ट्रॉफी जो है उसको हमें नाम उसका ही रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल लेट्स सी हु इज आवर एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, वी नीड टू डिफ्यूज दिस क्राइसिस डिप्लोमेटिकली एसएप। This reminds me कि हमें ambassador जो है ना रोवन एटिंगसन ही भेजना चाहिए as a gesture of goodwill. वो ये उसको मार हमारे देंगे ambassador है. एक्चुअली उसकी वक्त इस वक्त उसकी जान को खतरा होगा, वो वहां पे जाएगा और लगेगा कि दोबारा फेक वाला भेज दिया, इस दफा हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। They will probably list the real, they will list the real रोवन एटकिंसन, जिस वजह से उसके बाद यूके और जिम्बाब्वे के बीच में ना खाना जंगी शुरू हो जाएगी। So Yeah. Which raises an important question कि आपको कैसे पता वो फेक है? हाँ Like वो रोवन एंडरसन हो सकता है. Like हाँ so बिल्कुल, आपको क्या पता, आपने कोई डीएनए टेस्ट करवाया था उसका? this is a I can screenshot. फिर क्या लगे? This is a screenshot, हाँ but ये I just हाँ want to एग्जैक्टली, he उन्होंने got official official protocol. उसको Yeah. उन्होंने गाड़ी पे बिठा के जिसने वो हाथ हिलाते हिलाते जो है वो गया था उसके अंदर जो एग्रीकल्चरल जो भी इनका कॉन्फ्रेंस वगैरह या जो इवेंट इनका हो रहा था। सो या दे डिड गिव हिम प्रोटोकॉल, बट अगेन वही बात है कि उनका ख्याल था कि जी एक्चुअल मिस्टर बीन है, रोवन एटकिंसन आया हुआ है हमारे पास, तो उस वजह से उसको ना दिया गया था। फिर रियलाइज कि दिस इज इन फैक्ट पाक बीन तो उसको हरगिज इतना जो है वो नहीं मिलना चाहिए था। Or this was a very elaborate scheme by the agricultural conference कि like हम इतना जबरदस्त स्कैम करेंगे कि हम पूरा ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी देंगे और सब कुछ करेंगे. हाँ Like ऐसी वीडियो आप like you know this photo जो like अभी दिख रही सही से where he's doing that whole thumbs up thing, that's the face of the man who has just become a millionaire off of nothing. I think they the only bean they did not have in Zimbabwe at that time was a दूरबीन, बिकॉज अगर वो करीब से थोड़ा उसको देख लेते उन्हें समझ आ गई कि यार ये एक्चुअली जो है रोहन एटकिंसन नहीं है। उसको दूर दूर से दिखा रहे थे, कभी स्टेज पे दूर तक खड़ा किया हुआ था, कभी गाड़ी में दूर दूर से दिखा रहे थे उसको। Yeah. शायद उस वजह से उनको समझ नहीं आया होगा, दैट माइट बी वन रीजन इज वेल। अच्छा आगे क्या था? आई थिंक आई मिस्ड इट।
अरे हाँ, this was best. I sincerely apologize for the inconvenience caused by the fraudulent disguising as Mr. Bean. We Pakistanis are people. We Pakistanis are people with big hearts. As a gesture of goodwill and to keep brotherly relationships alive between the two countries, I offer you Lionel Messi free of cost for your next event. I love this particular line of thinking जो हमने की थी उसके बाद, जिसमें we had this one as well. We also had the क्या कह सकते हैं fake शाहरुख खान एंड ऑल्सो अदर जो हमारे इस तरह की शक्लें इनकी मिलती जुलती थी उनके साथ में किया था. दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग जो है ना मुझे सबसे ज्यादा मजाहिया लगी थी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मीम. बट अच्छा नहीं, I found something out from Twitter. This is not the first time हमारी exports इतनी high quality थी. हमने fake Mo Salah भी भेजा है वहाँ पे. नहीं, was that us or was that I someone else? just I realized the saw a post. I wasn't sure ये हमने की थी. Was that us? yeah. Was that someone else? I just saw like two Zimbabweans with like a guy that looks like Mo Salah, and everyone was like, remember the time we sent Mo Salah to them? मुझे पता नहीं है. I'm not sure कि वो हरकत हमने की थी या किसी और ने हरकत की थी, लेकिन maybe it was the same event मैनेजमेंट कंपनी, और उनका काम ही ये है कि वो फेक सेलिब्रिटीज मंगवाते रहते हैं और जिम्बाब्वेंस को बेवकूफ बनाते रहते हैं. असल जो सुपर विलन है ना वो अभी तक छुपे हुए हैं. दैट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसने ये सारा एक क्या नाम है यह डाला था और उसके बाद से वो गायब हो गए. तो कमिंग टू अ लार्जर क्वेश्चन, बिकॉज अभी हमने सारा मीम रिव्यू किया है और सारी चीजें की हैं कि इन टर्म्स ऑफ लाइक द ग्रेट पैंथियन ऑफ पाकिस्तानी मीम्स, जिसमें यू हैव ताहिर शाह, आई टू आई, एंजल, you have क्या कह सकते हैं anti government, you have most of all Major Adnan Sami, which I still believe was like the number one meme. Oh, that's not a meme. That's not a meme. This is you could get of like course. Exactly. That's आपके not ऊपर a केस हो सकता है. आप ये हाँ, कैशलेस बात करते हैं, हमारा एक ऑपरेटिव है. great figure जो हमारे Yeah. इतनी कुर्बानियां देकर एक दूसरे मुल्क के अंदर रह रहे हैं. आप देखें, he's been living under so much stress that he's lost like over 100 kgs in this time. Obviously वो टेंशन ले ले कि इतने उन्होंने वजन इतना काम किया है. There's no way he could have lost so much weight otherwise. वो स्ट्रेस से आधे होके रह गए हैं. It's very difficult living undercover for so long. Obviously it takes a mental toll. आप तो एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कौमी तराना पढ़ के सोता है इंडिया में. मेरे को हाँ, तो आप इमेजिन करें मतलब एक इतने अजीम इंसान. बहरहाल इसीलिए मैं उनको इतना ऊंचा रुतबा दे रहा हूँ कि मैं उनको नंबर वन कंसिडर कर रहा हूँ. तो वो हो गए, और इसी के साथ ऑफ कोर्स अब वी हैव पाक बीन. तो डू यू थिंक कि पाक बीन कैन फाइनली टेक ओवर दैट नंबर वन स्पॉट, या अभी भी do you feel it goes to maybe Tahir Shah, maybe Auntie Government, maybe someone else, perhaps maybe someone I've forgotten? उस पर्टिकुलर पैंथियन में आपको लगता है कि इनकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? I mean, it's definitely not number one. It was just क्या कहते हैं, I think what made it funny was the fact that this was an international thing, so we weren't the only ones involved. So that's what made it funny, and the fact that it actually happened. Like, this was not something we made up in our minds. This was something that actually, That it most was of it was from Pakbean going to Zimbabwe to Pakistan losing the fucking match to Zimbabwe. These are two things that actually happened. So like ये बस like मतलब it's like a simulation thing going on here. So like उसके हिसाब से I and think then it's like Tahir getting should be involved. like उनका प्रेसिडेंट और आपका प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं. लाइक ऑल ऑफ दोस थिंग्स मेक यू थिंक वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, व्हिच इज लाइक आप है ना टॉप अदर डे. बट हमारे शहबाज शरीफ साहब वो मतलब मुझे I don't know how much trouble I'll get for this. In fact I won't even say it. वो इन्फ्लेशन संभाल रहे हैं, वो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट जो मर गए ओवर अब्रॉड जो हैं उनको देख रहे हैं, फिर एक तरफ बोल रहे हो यहाँ पाक बीन का हुआ था सीन. सॉरी यार. amongst other things ये भी हो रहा है. equally important to be इक्वली fair. इम्पोर्टेंट. हाँ, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि हमें इसके बारे में अपोलोजाइज करना है. हमने आज तक ऑफ कोर्स अफगानियों के सामने तो अपोलोजाइज कभी नहीं किया, लेकिन हम जिम्बाब्वेंस के साथ अपोलोजाइज जरूर करते हैं कि यार सॉरी हमने पाक बीन भेज दिया, because that's definitely something that we've sent across the border. So And again this is it's a good step. Like we can have like I think हमारी इन्फ्लेशन का जो है हल यही है कि हम impersonation की इंडस्ट्री बढ़ाएं.
अपनी हाँ impersonation नहीं, हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं of real people. Obviously हमें बाहर तो बोलना पड़ेगा कि रियल ही है, वरना मार्केट हम कैसे चलेगी. मतलब फेक मौसला अगर भेजा हुआ है एलिजिडली और डेफिनेटली फेक बीन भी भेजा हुआ है, तो इस तरह की हमारी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने अरसे से एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है, बहुत बड़ा मसला हमारे है, हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो ऑब्वियसली हो नहीं पा रहा बिकॉज वी डोंट हैव टू यू नो एनफ एक्सपोर्ट्स, हम इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे होते हैं, सो वी नीड टू हैव समथिंग जो हमने बाहर भेजनी है. ऑलरेडी हम इतना ह्यूमन रिसोर्स तो भेज रहे हैं अपना यू नो दूसरे मुल्कों में, सो व्हाई नॉट दिस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स एज वेल, जो कि बाहर जाए और दूसरे मुल्कों से डॉलर्स जो है वो लेके पाकिस्तान के अंदर आए, तो बाय हुक और बाय क्रोक. तो बेसिकली उसको भी हमें एक इंडस्ट्री बनाना चाहिए, एंड यू नो वी encourage द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस एंड टू रिकॉग्नाइज एज ए लेजिटिमेट इंडस्ट्री, ताकि इसको आगे इसको यूटिलाइज करके हम क्या कहते हैं जरिए मुबादला से कमाया जा सके. सो ऑन दैट particular note, on that positive note, जहाँ पे हम पाकिस्तान के नोट कमाने की हम बात कर रहे हैं, उस नोट पे हम इसको खत्म and we will see you guys soon after the next series of matches, जब we will see what हम the न्यूजीलैंड पे हारेंगे हाँ इंशाल्लाह. हाँ इंशाल्लाह मजीद मीम मटीरियल के लिए हम नेदरलैंड से भी हारेंगे या और वहां से भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट जो बाय द वे आया था उसका ट्वीट, सॉरी उसका मैसेज आया था फेसबुक पे, कह रहा था कि आई एम हेडिंग टू द नेदरलैंड्स. तो कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है नेदरलैंड्स के मैच के खिलाफ, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. जब भी कुछ होगा वी विल रिपोर्ट ऑन दैट एज वेल, ऑन दैट वेरी नेदरलैंड्स में ना इंपॉर्टेंट. फेक डायना भेजी हुई है probably or सॉरी. something like that. हमने नेदरलैंड्स में कोई फेक लेडी डायना भेजी हुई or something like that. We never know. हाँ यार वो मरी नहीं थी यार, हम बता रहे हैं तुम्हें, वो जिंदा थी, वो टू पाक की तरह भी ना टू पाक Oh मरा yeah, है ना, Tupac भी. तो लेडी डायना भी अभी तक जिंदा है, तो वो उसको उसका भी एक वर्जन जो है हमने वहां पे भेजना है. तो या Yeah. सो एनीवे, सी यू गाइस सून, बाय.